What's up, boys? बहुत दिन हो गए लाइव स्ट्रीम करे हुए। हाँ ब्रो, लखन कैसा है? हाँ, काफी टाइम हो गया। What's up आयुष्मान, हाउ आर यू? लोग सुन पा रहे हो मुझे ढंग से? ब्रो बता दो चैट में। What's up ईशान? What's up बाबा स्पैरो, कैसे हो? अरे सब यूजीज आ रहे हैं आज। हाँ ब्रो, थोड़ा सा बस ब्रेक ले रहा था sort of. What's up TC, how are you? How does it hard fight for Pooja? It's a close fight, I think. After Pooja's last performance, Manas Panda. What's up man, Manas, how are you? हाँ जी नीचे, काफी टाइम बाद। थोड़ा बीमार था, कुछ कम इवेंट्स भी थे। क्या कह रहे हो पापा, समझ नहीं आया। तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने देखा चुगलिंग वाला वीडियो जो बनाया? हाँ जी, यस यस यस, आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। आज मैंने नहीं डाला, मैंने सोचा कल डालूंगा, क्योंकि आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, वेयर यू कैन वॉच द फाइट, अपोनेंट के बारे में थोड़ा सा। और हाँ, मोनजीत ने साइन कर लिया यार वन चैंपियनशिप के साथ। अगर आपने मेरी वीडियो देखी थी वो प्रोस्पेक्ट, इंडियन प्रोस्पेक्ट्स टू वॉच आउट फॉर, उसमें मनजीत वाज आल्सो देयर, मनजीत। एंड थैंकफुली अब उनको एक मौका मिल रहा है वन चैंपियनशिप लड़ने का। सर ओमान देश एमएमए ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? ओमान में आई एम श्योर, अगर वहाँ पे जिम है बिल्कुल कर सकते हो भाई। वैसे भी कहीं भी शुरू कर सकते हो। From your FRM Europe, let's see. Yeah, I think you probably will, bro. I think there's a high chance. स्पैम मत करो देश। अचूमेंट कोलन के बारे में और बताओ, उनके रोड की यूएफसी के बारे में। रोड की यूएफसी के बारे में, रोड की यूएफसी तो नहीं जा रहे वो। और अगर आप पूछ रहे हो, लेकिन जनरल एक बहुत ही अच्छा फाइटर है यार, बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स एट द वेरी लीस्ट, बिकॉज एमएफएन के बैंटमवेट चैंपियन है अभी में, एंड ही इज ऑन अ 5 फाइट विन स्ट्रीक। एक लॉस है उनका अंदर लिस्ट अगेंस्ट, काफी लोग क्लोज मानते हैं, बहुत क्लोज फाइट। देश बताते थे अब जो इस्लाम वर्सेस ऑफिशियल नहीं, अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आया ऐसे ऑफिशियली, बट आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट। व्हाट्स अप अतुल? चल रहा है दो, चल रहा है देश। हाँ ब्रो, क्योंकि प्रोफेशनली करना है या फिर अपने आप खुद सीखने के लिए करना है, वो अलग बात है। बट अगर जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अंशुल आल्सो अंडर अ बिग मैनेजमेंट कंपनी, या ही इज अंडर पैराडाइम स्पोर्ट्स, जो कॉनर मैकग्रेगर की जो मैनेजमेंट है। वो वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। ओके ओके, मैंने माइक लगा नहीं रखा था, तो लगा देता हूँ। दिगंबर को चांस बना है यूएफसी आने का। दिगंबर के पैर में भी चोट लगी है, तुम लोग को याद है ना, तो नीरज वाली फाइट थी। तो आई थिंक हिज प्लान इज टू, एक सेकंड गाइस, मानस एक सेकंड, कनेक्शन। अब बताना, आप आवाज आ रही है अच्छे से? एक बार चैट में बता दो यस या नो। ओके, दिगंबर के साथ, हाँ, सो दिगंबर के पैर में चोट लगी, तुम देखो ना, एमसीएल टायर है उसका। So I don't think he's planning to go anywhere out of the country to compete at least this year. I think उसका aim है to light fight for a lightweight title. एमएफएन अगर इवेंट कराते हैं एक और, hopefully he's recovered by then, और वो टाइटल के लिए लड़ेगा, lightweight टाइटल के। अब opponent I think वो बाहर से लाएंगे उसके लिए। उसके बाद probably we see him go to the UFC next year if he fights. I think he needs some more experience. अभी तो तुम फाइट प्रेडिक्शन एंड रिटर्न कब अपलोड कर रहे हो? इस हफ्ते करूँ या तो कैसे हो? बढ़िया वंश, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? भाई ये इस्लाम कर रहे हैं लोग, बट इस्लाम बहुत बिग नहीं है, या बिग नहीं, बिग तो नहीं है, बिग तो नहीं है। इंडिया हैज द पावर टू नॉक आउट आल्सो, as much as I'm a Islam fan, that's a
क्लोज फाइट भाई एमएफए 16 में फाइट करने का कितना पैसा मिला सेम मिला होगा ब्रो थोड़ा बढ़ गया होगा आई गेस बट ऐसे स्पेसिफिकली वो लोग अपने नंबर्स रिवील नहीं करते उन्होंने एक जनरल नंबर्स बताए थे जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी तुम लोगों ने देखी होगी कंटिन्यू सैलरी है आई एम श्योर वो अपडेट भी हो गया होगा सो तुम लोग बताओ तुम लोग को क्या लगता है चुप तैयार है क्या जाने के लिए यूएफसी अभी काफी मैंने डिबेट देखा था वीडियो में कमेंट्स में इस्लाम बिलाल से भी बड़ा लगता है यार हाँ मतलब when he fills out वो he cuts a lot but वो साइज क्लियरली टुकुरिया के लिए इज नॉट एन इशू टुकुरिया कौन सी फाइट है जहाँ पे टुकुरिया के पास साइज एडवांटेज होता है बहुत कम फाइट्स आई थिंक यूएफसी में तो कोई भी फाइट नहीं है जहाँ पे एज अ हाइट एडवांटेज अभी तो भाई जवाब सुनने के बाद मुझे लग रहा है वो मुझसे फाइट नहीं करने वाले बैड मैचअप पंच ओह यू थिंक सो कैसा लगा तुम लोग को इंटरव्यू तुम लोग के लिए मैं लेके आया यार वो अमिंदर भाई के साथ इंटरव्यू थोड़ा और उसको प्यार दो यार शेयर करो भाई लोग के साथ तो सब मानस कह रहा है आवाज अभी भी क्लियर नहीं पास आ जाओ भाई अमरिंदर अमरिंदर नहीं है अमरिंदर है ब्रो भाई अमरिंदर भाई का इंटरव्यू काफी अच्छा था जेनरल क्वेश्चन था दिगंबर भाई का कैंडिडेट सर का इंटरव्यू थैंक यू वीके ट्राई करूंगा ब्रो ट्राई करूंगा ये सारे फाइटर्स जो हैं बहुत सीरियस फाइटर्स हैं एंड आई मीन सीरियस इन द सेंस लाइक उनको इतना इंटरव्यूज देना पसंद नहीं है तो मैं तो बहुत मुश्किल से अमिंदर के साथ इंटरव्यू मिला आई वाज वेरी हैप्पी हाँ ब्रो अभिषेक अभी कुछ ज्यादा इवेंट्स नहीं थे थोड़ा बीमार भी हो गया था ब्रो 10 दिन ब्रेक लिया ऑलमोस्ट भाई भाई बस एक शर्मा के साथ इंटरव्यू दिला दे अच्छा श्याम आनंद के साथ कह रहे हो ठीक है मैं बात करता हूँ उनसे उन्होंने वैसे बोला था मुझे इंटरव्यू देंगे फाइट के बाद तो आई गिव इट अ ट्राई बाय द वे भाई जो पहले से चैनल देख रहे हो तुम लोग ये नया वाला थंबनेल कैसा लगा ये बताओ मुझे जो चुमरन की वीडियो के लिए बनाया था अच्छा लगा क्या Give me some insight on what's up here. What are Korean's options? I don't know. I think like usually जब restaurant management sign करता है वो सीधा यूएसटी में कराता है. So thank you restart. Thank you so much. Thank you अभिषेक भाई. वो यार कुछ नोटिस नहीं हुआ हाँ क्योंकि तुमको लाइक आई नो जो हार्डकोर ये थंबनेल इशू नहीं है बट मैंने थोड़ा सा उसको वर्क करने की कोशिश की थी कि देखो काफी लोगों ने सजेस्ट किया है कि थंबनेल भी बेटर करो एंड ऑल दैट थैंक यू अंश ओके तो चेक करता हूँ मैं एक सेकंड चेक ओके आई थिंक इट शुड बी बेटर नाउ थैंक्स अंश भैया अगर मैं एमएमए में करियर बनना है तो दागिस्तान जाना सही रहेगा क्या 2-3 साल के लिए आई मीन जरूरी नहीं है बट जा सकते हो तो सही है तो चेक हाँ आई चेक दैट सॉरी आयुष्मान थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट अंश को सही लगा आई एम लूजिंग मोटिवेशन टुवर्ड्स माय अपकमिंग एमएमए करियर व्हाई यादव व्हाट हैपेंड what is your motivation good layout in vibrant colors thank you brother yes मैं ट्राई करूंगा ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है यार लाइक रिपोर्टिंग तो इज फाइन विद मी बट ये जो एडिटिंग है एंड वीडियो क्वालिटी एंड थंबनेल्स ये सब थोड़ा नया है मेरे लिए मोर पॉडकास्ट विद व्हाट्स अप फिनोमिनल हाँ आई गिव इट अ ट्राई ब्रो दे आर टफ टू टॉक टू यू नो मैं सोच रहा हूँ तुम में से कोई देहरादून रहता है क्या चैट में बताओ देहरादून रहता है कोई मैं सोच रहा हूँ बस पकड़ के देहरादून आ जाऊँ बताओ व्हाट्स योर टेक ऑन दिस नेक्स्ट फाइट इज इट अ टफ मैचअप व्हाट्स योर टेक I'd say it's a close fight. I'll do a breakdown अभिषेक अब तुम लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो 3 मंथ्स पहले मैंने जब उसका अनाउंसमेंट किया था उस वीडियो पे लाइक 300 व्यूज हैं सो आई डोंट नो आई टॉक अबाउट इट दो भाई ये मैनेजमेंट क्या करते हैं फाइटर्स के लिए भाई ये नेगोशिएट करते हैं यूएफसी के लिए मतलब यूएफसी के साथ नेगोशिएट करते हैं फॉर द फाइटर तो बेसिकली कि क्या जैसे अब अभी तो पहली डील तो बेसिक सबको मिलती है 10 टू विन 10 टू शो $10,000 टू विन $10,000 टू शो उसके बाद अगर फाइटर अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको बेटर डील्स मिलती है राइट तो वो जो डील होगी नेगोशिएट करनी पड़ती है यूएफसी के मैनेजमेंट के साथ
तो आपका अपना मैनेजर होता है यूजुअली तो अच्छा रहता है। कुछ-कुछ बहुत बड़े फाइटर्स हैं जो खुद मैनेज करते हैं अपने आप को, जैसे शॉन ओमैली। सो ज़रूरी नहीं है हमेशा मैनेजमेंट होना, बट यूजुअली मैनेजमेंट रखते हैं फाइटर्स एंड क्योंकि आसान हो जाता है, दे कैन फोकस ऑन फाइटिंग एंड द मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन गेटिंग अ बेटर डील फॉर देम। प्लस मैनेजमेंट एक परसेंटेज लेता है उनके पर्स से, मतलब उनका जो पैसा आएगा उसमें से कट लेता है मैनेजमेंट। तो बेसिकली कोचेस भी कट लेते हैं फाइटर्स के पे चेक से, प्लस मैनेजमेंट भी कट लेता है, प्लस टैक्सेस। तो सोच लो फाइटर्स के कितने पैसे कटते हैं, तब जाकर उनको पैसा मिलता है, बचा कुछ। जस्ट यूज एआई for thumbnail, it will make your life much better. आयुष्मान, हाउ डू आई डू दैट ब्रो? मेरे को चैट में या इंस्टाग्राम पे, या तुम लोग एक तो सब जो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं फॉलो करते? तो सुनो, मैंने एक डिस्कॉर्ड बनाया है, चैट में डाल रहा हूँ मैं। आओगे तुम लोग? तुम में से कोई डिस्कॉर्ड यूज करता है? या फिर ये मैंने फालतू में किया? मैं चैट में डाल रहा हूँ ये तुम लोग के लिए। मतलब आई कैन जस्ट शेयर द लिंक ऑफ द डिस्कॉर्ड ना, और तुम लोग के लिए काफी होगा वो, या कुछ अलग इनविटेशन देना पड़ेगा मुझे। डाल दिया मैंने चैट में, ज्वाइन करके बताना। ठीक है भैया। आयुष्मान ऑल्सो, हाँ, मैसेज मी एंड लेट मी नो इंस्टाग्राम पे या इस डिस्कॉर्ड पे हाउ टू डू दैट। ये साहब ने मना कर दिया एरिया से फाइट करने के लिए, आपको दिखा रही है। हाँ, उसके मैनेजर के हिसाब से he wants him to fight someone else before fighting us now, so yeah. If Pooja is next, do you think she can get ranked? No, 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 no. No, she has to fight at least 2, 3 more fights before she gets the ranked fight. Does Bruce Lee was a fighter or not? He was a fighter. Just not probably as well rounded as today's fighters, but yeah. What is next wrong with this? पता नहीं bro, injury से भी recover कर रहे हैं. Let's see. When he reach to coach and find out what are Anshul's future plans. Is he going to continue lightweight to move to featherweight until when can we expect his comeback? I'll try that Abhishek for sure. Can you explain UFC more deeply, like entry? I can. I'll do that. Telegram बना भाई, Discord समझ ही नहीं आता. अच्छा, इतना जल्दी लाइव आ गया. हाँ, थोड़ा जल्दी आ गया. Discord will be a nice place to fight companion. Yeah, that's what I was thinking. We can do a lot of fight breakdowns there. How do you see the future of Manjeet Yan? Uh, I'll do a breakdown, man. I'll talk about that more. मैंने अपने prospects में इंडिया के जो टॉप prospects हैं एक वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले. उसके अंदर मंजीत वाज अ पार्ट ऑफ दैट prospect list. I think he's very talented. अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट पता है उसको ज्यादा चैलेंज मिला नहीं है, so that's why I'm excited to see जब competition थोड़ा बेटर होता है how he performs. He's a finisher and he's quite well rounded to be honest. हार्ड वर्कर भी है बहुत. भाई सामा जस्टिन का मैच तो सेम शायद किसी के साइड में. हाँ, वो बहुत इजी नेगोशिएशन होती है. अगर कोई तुम लोग क्यों नहीं आ रहे डिस्कॉर्ड पे? कोई है ही नहीं है डिस्कॉर्ड पे. कौन आस्क नॉट टू कोई न्यूज़ नहीं ब्रो. भाई इलाहाबाद अजीज को इतना पेट की पूजा है क्योंकि ब्रो वो काफी शेडी सा मैनेजर है, इसलिए व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद एलेक्स? आई थिंक नथिंग वाज रॉन्ग, ही जस्ट got outworked by someone who was better than him that day. Like styles make fights, you know. So I just think close fight थी though. It was a very close fight, and I think Alex can actually win the rematch. But even you have to keep in mind कि जो अपने ये थे क्या कहते हैं मागोमेद was like उसने almost पूरा ट्रेनिंग कैंप रमजान के वक्त निकाला है. उसने सिर्फ फाइट वीक के वक्त फास्टिंग नहीं की थी. Even he would be better in the rematch. But I think it's a winnable fight. But he lost. It was a fair and square loss, though. 3 rounds हारा है वो मेरे हिसाब से clearly. I think मेरे हिसाब से अगर पूछो, like I think he got stuck on one plan. I think he was thinking कि वो leg kicks मारेगा मागोमेद को और मागोमेद का हालत खराब हो जाएगा अनकलाइव का. But हुआ नहीं. And then he didn't make any adjustments. So I think that's why. Why your stream gets disappeared from channel? You want to see it later? Okay, I'll leave some live streams. Sometimes I don't leave them on because उसके अंदर अगर हमने थोड़ी अजीब अजीब बातें की हैं तो फ्लैग हो सकता है. What fighters can we see this year? Road to UFC this year. I'm going to make a video on that. I'm not. Why is Manjeet Singh not on the apology? He is. He is. I'll give you the link. What are you saying? He's 5-0. He's on the apology. Chat में डाल रहा हूँ link फिर भी. Abhishek, here's the link. Check it out. Don't need Telegram. Discord is much better. But no one is joining it. Why don't you guys join it? मैंने link डाला तो. I'll pin it. Anyway, आगे चलते हैं.
अच्छी मेमन का फाइट कहाँ देखने को मिलेगी, एनी आइडिया? मे में मिलेगा यूएफसी फाइट पास पे। This is my coach and trust me is like Indian version of Dmitry Johnson. No, okay, congratulations, yeah, good coach you have. In Alex to distract कर दी. अरे हट, bro, नमस्ते. What's up? How are you? Alex, this is yeah, did you my potential on the same card? Yeah, to be fun. If that happens, I think it is overrated. You can. I like cricket. I don't like it as much as MMA. भाई हम अंदर ने इंटरव्यू में बोला था कि अर्शन के साथ फाइट होने वाला था उसके हाँ 3 बार अपैरेंटली 3 बार बुक हुई है. What's up, Rakshit? How are you? भाई तो मोनेटाइज है हाँ. Why Alex didn't land leg kicks after round one? Uh, he did, but also because he's southpaw. आगो में साउथपॉ तो उसको फ्रंट लेग से लैंड करनी पड़ती है तो वो थोड़ी डिफरेंट है. वो सुपर सेल बॉक्सिंग के लिए कुछ नहीं में. या यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट बट इट विल बी टफ क्योंकि आपको टेक डाउन डिफेंस के लिए टफ होगा. I mean, the set was going on fight. Okay, that was an interesting matchup. Yeah, it was. Not able to join. Okay, so wait, why are you not able to join? What is it saying, T series? Like, वरना मेरे को अगर पता होता मैं कैसे ऐड करूँ लोगों को. So I'll figure it out next time. Alex being party traveling and Margot like lockdown fight. Yeah, you can see that, but it's still a close fight. Arshim Namanin is in DC's team. How we know that? How do you see the Gabor versus Obese Yakub for lightweight title? I don't think Obese deserves a lightweight shot yet. And also, I don't think he has a contract maybe with MFN yet. But it'll be stylistically, actually, I think it's a good match. But I don't think I think Obese needs a few more wins before he gets a title shot. भाई amateur में फाइट करना जरूरी होता है कि आप कोई डायरेक्ट प्रोफेशनल नहीं जा सकता अगर उसके पास हाइप हो तो. अरे हाइप कहाँ से आएगी? किस बात की हाइप? सड़क पे लड़ेगा भाई, क्या बोल रहा है वो? कहीं तो लड़ना पड़ेगा हाइप बनाने के लिए. सीधा प्रोफेशनल जाएगा नहीं. इंडिया में फ्लाईवेट फेदरवेट है, बाइकन के हैवीवेट फाइटर्स. भाई हमारे लोग के नेचुरल एवरेज साइज यही है. हमारे यहाँ पे एवरेज हाइट इज आई थिंक 5'6", 5'4". You train MMA. I train most. अरे देवन, of course I train like some boxing. I should come to the gym one day. I'll come interview you and then we both will train together थोड़ा सा. है ना देवन? What do you think? अभी कोई टूर्नामेंट आ रहा है तुम्हारा बताना मुझे चैट में. Archie, what's up? Amendra versus Dinesh now, who has no chances? It's a very close fight. Okay, close fight. Please, sorry. Let me say this. Either it's going to be a washout. वही है. The Dinesh का हमने देख लिया बलबीर सिंह के against what he did. Or I think because Akash is also a wrestler, but he's not as good as Dinesh, obviously. And I think Aminder ने वहाँ पे अपना टेक डाउन डिफेंस काफी अच्छा दिखाया था. But I do think if this fight is booked, I have to be honest. I think I'll choose Dinesh as a favorite in that fight. I have to be honest. Fighters you hate. I don't hate fighters. इतना टाइम नहीं है ब्रो. नेक्स्ट कब हो सकता है? पता नहीं ब्रो. ऐसे कुछ बात नहीं है. बट MFN कंटेंडर सीरीज होने वाला है जल्दी. What will be the future of Dricus Duplessis? ऐसे ही लड़ता रहेगा तो बहुत सही होगा. Send Discord invite link. Okay, how do I send that, bro? Where is my invite link? What the heck? एक सेकंड दो गाइस, मुझे अभी फिगर आउट करना पड़ेगा. Give me 1 second, guys. Sorry. One second. Discord. हाँ अब आया. ओके बॉयज, अब मैं डाल रहा हूँ चैट में. तुम लोग इसको ज्वाइन करो. ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आगे आगे. चैट पे पहुंचा बट टू बी ऑनेस्ट डिडंट प्रैक्टिस मच. आई मीन मैच के हफ्ते पहले वो ऑस्ट्रेलिया में मस्ती कर रहा था. मैं क्वेश्चन हार्डली ना अंशुल की टाइम आ गई थी. मैं समझ गया यार तुम लोग फालतू का कोक मारते हो. सेंड डिस्कॉर्ड इनवाइट. हाँ आई डन दैट इजीली. तो द फाइटिंग नगर टीम इज इनक्रेडिबल. इनकी चांस है एक चैंपियन बनेगा 2025. वॉइस को क्या हो गया भाई? तो इतना सुंदर. अरे यार विहान ये क्या बोल रहे हैं? कारण तो
बता दोस्त भाई एक्सरसाइज अगर सच्ची में पूछ रहा है. Hi bhai, any update on upcoming Indian fighters rather than Pooja? Manjeet Yan is fighting this Friday, one championship. Mein. What is your MMA career based popcorn? Yellow stripes style. समझ गया. Bro, what this fighting nerds? Fighting nerds basically एक team है, एक gym है. अब combine हो गए हैं. These are like a group of fighters. Chao Borralho, Team, John Silva, Carlos Prates, एक और है, मैं मिस कर रहा हूँ. ये सारे फाइटर्स हैं जो मतलब बहुत ही इन्होंने ब्रांडिंग करी है अपनी ऐसे चश्मा पहनते हैं नर्ड्स की तरह की और वो साथ में सारे ट्रेन करते हैं और अभी बहुत अच्छी विनिंग स्ट्रीक पे है सारे फाइटर्स. हाय बहन ओके यू आर रेडी टू जंप अहेड ऑफ शाहरुख. हाँ डिस्कॉर्ड पे कुछ आया ना. कौन आया है अभी टी सीरीज आयुष्मान व्हाट्सएप बॉयज चलो आ गए. ठीक है अब यहाँ पे हम बात करेंगे. वेरी गुड तुम लोग ने मुझे ना डिस्कॉर्ड का फायदा ये है कि हम ना फाइट ब्रेक डाउन साथ में कर सकते हैं सारे के सारे. एंड ऑल्सो एक और फायदा ये है कि you guys can give me your suggestions and if there's anything that you want me to cover urgently हम लोग थोड़ा सा बेटर कांटेक्ट में रह सकते हैं दूसरे के साथ. So join the Discord. Hey, thank you Shantanu, thank you so much. You are ready to jump ahead of Shafqat. Uh, you are ready to jump ahead of could be वैसे it depends on how good the win is but depends on how bad the injury that Shafqat has because Shafqat की injury specifically पता नहीं क्या है. You want Neeraj versus the ways to let's get the example to break things. That's actually not a bad suggestion because Oveis this much Oveis has earned. He's earned a rematch with Neeraj and yeah काफी अच्छा सजेशन है एक्चुअली. गुड सजेशन. भाई ये चुनैन का सिलेक्ट हुआ मैंने सिलेक्ट नहीं हुआ है. एक मैनेजमेंट फर्म है जो बहुत अच्छे प्रमोशंस में ही यूजुअली फाइटर्स को भेजता है. उन्होंने साइन कर लिया है चुनैन को तो अब वो चुनैन का करियर हैंडल करेंगे आगे से. ये अभी मैं सीख रहा हूँ ये डिस्कॉर्ड चलाना बॉयज तो बेयर विद मी. So what do you think Digambar versus Rohit? Tough fight. Name top three MMA fight organized. Top three तो है ही नहीं यार unfortunately अभी but yeah like it's very easy to say UFC. I would actually say one championship in terms of entertainment and then PFL. I was surprised when I saw Digambar's record go from 4-0 to 6-0 after his most recent fight. Yeah, so basically they added his first fight जो बहुत टाइम से टैपोलॉजी पे ऐड नहीं हुई थी. ये चैंपियनशिप के कंटेंडर सीरीज में उनकी फर्स्ट प्रोफेशनल फाइट हुई थी जहाँ पे उनको नॉकआउट मिला था नॉर्मल. So thankfully that was validated now and they've added it. Who would you advise for what would you advise for against putting 4 year kid into no. I would suggest that you put someone like at that age into gymnastics. अगर आप अपने बच्चे को या अपने नेफ्यू को जो भी है उसको आप जिमनास्टिक्स में डालो इस एज में उनको भी नॉर्मली डेवलप करने दो. Probably I think 10-11 is a good age to introduce them to MMA. But don't force them and find like a very good gym like if you can because you need to be careful you know uh, at the end of the day बच्चे हैं तो you have to be careful where you send them and कौन उनको गाइड कर रहा है कौन ट्रेन कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना. MFN should bring some good fighters from international circuit with good wrestling to the Gamble next title fight. Yes, I agree. I think they'll do that. I saw the Dinesh versus Sagar and Dinesh ragdolled him. True. That's what he did to Balbir also. Fighting nerds are exciting fighters. I agree. April 13th camp is going on. Come cross train. We'll train together. It'll be fun. April 13th camp. What camp? You have okay. You're fighting on April 13th. Okay. Okay. हाँ. Let me know when you're free. तुम Discord में आ गए हो तो हम बात करेंगे इसमें. Is it true that Ilya versus Islam and Khamzat versus Rikus on the same card? I haven't heard of that. If that happens, that'll be amazing. What's up, BFM? How are you? शिवम कैसे हो? रामत की फर्स्ट फाइट का रिकॉर्ड डाल दिया. हाँ हाँ हाँ. Why don't he never come back? भाई प्लीज यार let him rest bro. रामत ने वन प्रो फाइट एमएफएन से पहले की थी रेव में. Yes, बात कर ली. Alex was worried about Axe wrestling that he stopped saying the other cage. Alex did not even show me the center of the cage. True. The takedown defuse is problematic. How do you see the takedown defuse or did I say the takedown threat?
How do you see Clinton de Cruz? I mean, how do you see? He's a very good fighter. He's just not been active. Yo, you can join voice chat during fights or fight analysis. Yes, I can. What do you think? A good striking. क्या मतलब भाई समझ नहीं आया भाई वन चैंपियनशिप में से 5 फाइट फाइट है ओ क्या मेन इवेंट देखा था क्या आज उसका a lot of people are saying the Amber is skinny for lightweight, but oh no, he's not. He can put on a lot of muscle. And he's a wiry guy, different frame, but he's strong, obviously. Right? But I think his body frame is rather big for lightweight, with more muscle and he is big. Yeah, I totally agree. I totally agree, Rishi. So, how lose belly fat? I mean, that side belly fat is tough to lose. Randeep, I think you should just probably balance it with your diet and like doing a lot of high intensity workouts. Like, you can't just do with walking or light work. You have to do sprints and sometimes long distance running like 5K, 6K also. Not a lot is happening in MMA lately. A lot is happening is just that like Indian MMA में थोड़ा सा stifle था but अब मंजीत की फाइट आ गई है तो मैं उसके लिए तुम लोग के लिए breakdown डालूंगा. I do like Dushan's wrestling in MFN. His wrestling is good. I would just like to see some more like stand up so that it's exciting. But his wrestling is good. There's no doubt. बहुत अच्छी scrambling ability है. Anshul versus the Gambler. I'll still pick Anshul. I'm being honest. मंजीत जैन का opponent कैसा है? उसके बारे में breakdown डालूंगा शिवम मैं कल डाल रहा हूँ वीडियो तुम्हारे लिए. Please send the Gambler 2 3 years in Pakistan for grabbing. ये 2 3 years में यार बहुत टाइम हो जाएगा. Oh, voice is fading. Maybe I'm too far away. Check, check. एक बार जरा chat में बताओ. Can you hear me? Check, check. Who will win Anshul versus the Gambler if they fight now? I think I'll still go with Anshul, bro. भाई यू हैव गुड नॉलेज इन एमएमए आपको किसी अच्छी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पे किसी जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए यार प्रॉब्लम पता है क्या है मानस उसमें अगर वो कर भी लिया तो फिर मेरी ऑब्जेक्टिविटी चली जाएगी मेरे को जो भी वो कहेंगे वो करना पड़ेगा तो मैं तभी उसके बारे में थोड़ा सोच के घबराता हूँ तुम लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई कैन डू इट हियर एंड आई एंजॉय डूइंग दिस कट ऑन कार्ब्स एंड ऐड या आई एग्री What do you think about Volkanovski versus Lopez? Oh, I think it's a close fight, but pata nahi, I have a feeling Volk can win it. I think Volk can win it if he can like survive the first round somehow. I think he can. Cross Train Fight Club कैसा है भाई and fees कितनी है? Bro अच्छा club है. Obviously यार अंशुल जैसे talent को produce किया है. Best talent ज्योति. Lot of good fighters. देवन वहीं पे train करता है. देवन उसके बारे में आपको और बता सकता है. But fees के बारे में मुझे exactly पता नहीं है. वो change होता रहता है, बढ़ता रहता है obviously क्योंकि competition. Like a lot of people keep wanting to train there. But it's a good gym from what I know. Grappling especially. What do you think about Chiro Suzuki versus the Gambler? See his record and wins on tap. I've watched Suzuki fight, but yeah, I'll check it out and do it. यूपी भाई यूपी पूजा दी की फाइट कब है पूजा दी की फाइट 22nd को है या 21st नॉट क्लियर स्टिल हाँ what makes Makachev so special Oof, you can like talk about that forever bro just I think what makes him special is his mindset I think because otherwise he's just like a freak athlete वो बोलना गलत होगा क्योंकि उसने मेहनत करके किया है वो अपने माइंडसेट से but I think what sets him apart is his mindset like that's what makes him special yeah I mean if it's not that clear okay I'm not sure bro Randeep I tried to fix it man sorry bro honest opinion did we overhype Anshul was he never that good or did he just run into Quillen way too early okay honest opinion I think we put a lot of pressure on Anshul because he was the first male fighter after a long time going and representing us. And that's what I was talking about. He is a very good fighter. He is some of the best talent that we have. And it's not his fault and it's not our fault. Kisi ka fault nahi hai ki we are just new in the sport and it's just going to take time to like improve. Like overall, like एक ground set होने के लिए. So to just accost him
Of course, personally we can have breakdowns of technical breakdowns जो issues थे, we can talk about that. बट एक लिमिट में होना चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ पायनियर फॉर अस. रोड टू यूएफसी के थ्रू वो जीत के गया है, तो ही इज अ पायनियर, ही इज क्लियरली अर्न दिस पोजिशन. बट देन अगेन यूएफसी के अंदर भी बहुत टीयर्स हैं. आप सिर्फ टॉप 10 फाइट्स नहीं देखते हो, बहुत सारे फाइटर्स हैं लाइट वेट पे, बहुत सारे फाइटर्स हैं पूरे यूएफसी में. आई थिंक अराउंड 800 फाइटर्स हैं. सो ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम लेवल, सो देयर इज ऑब्वियसली डिफरेंट लेवल्स. एंड यू नो, आई डोंट थिंक we overhyped him. I think we just put a lot of pressure on him by thinking that just because we have a fighter who's going to the UFC is 100% going to win. वो हमें थोड़ा सा उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लाइक प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग लाइक हाउ वी शुड हैव अ माइंडसेट विच विल अलाउ अस टू थोड़ा सर्वाइव दिस. क्योंकि ऐसा लगता है अभी हम लॉस मिलता है तो हम लोग ज्यादा ही हार्ड ले लेते हैं, और अगर जरा सी एक विन मिलती है तो हम बहुत ज्यादा भी समझने लगते हैं अपने आप को. ऐसे नहीं चलेगा. अभी कम से कम 5-6 साल लगेंगे मेरे हिसाब से फॉर अस टू हैव लाइक अ टाइम वेयर ऑल आर फाइटर्स, वी हैव मल्टीपल फाइटर्स इन द यूएफसी. एक बेल्ट के लिए लड़ रहा है, एक शुरू कर रहा है, एक टॉप 10 में, एक टॉप 5 में. उसके लिए टाइम लगेगा अभी. एंड इट लाइक लेट इट हैपन, एंजॉय करो जब तक, और स्पोर्ट को मजे लो. एनीवे, आई डोंट वांट टू स्टॉप ऑन दिस rant. Angad Bish is a true legend for doing so much for Indian MMA when he's barely 30. I totally agree. भाई फेव क्रिकेटर मोहम्मद कैफ. Angad Bish has more left for him. I think so, 100%. I hope he recovers fast and fights. Prime Wolf could have destroyed Lopez. Now his chin is suspect and Lopez hits hard. True. True. I agree. I just think that Wolf can get it done if he's like really hungry. But I'll still favor Lopez. ब्रो बॉक्सर स्किप सीख लिया मैंने. आई मीन आई एम हैप्पी एज वेल, बट कोई टिप दोगे फीट पे लाइट होने का? बस स्किपिंग करते रहो ब्रो. और मतलब ट्राई टू डू दैट मोर इन लाइक स्पारिंग एज वेल, लाइक स्टेइंग ऑन योर टोज द होल टाइम. कैन आई बिलीव वॉल बैक टू बैक के होने के बाद भी फेवरेट है? ओह नहीं, इट्स नॉट अ शॉक फॉर मी. बहुत ही डोमिनेंट चैंपियन था. और ये एमएमए क्लब भी अच्छा है, बट दूर पड़ता है. हाँ दूर है, गुड़गांव. अच्छा, पूजा तोमर प्रेडिक्शन क्लोज फाइट. मैं ब्रेकडाउन डालूंगा इस हफ्ते. But I think he's too early for the number. Yeah, I mean, for sure. भाई विंग चुन इफेक्टिव है क्या एमएमए में? आई डोंट थिंक एमएमए में, बट कोई ना कोई टेक्निक आई एम श्योर एप्लीकेबल तो होगी. कोई ना कोई टेक्निक उसकी, क्योंकि मेरे को खुद विंग चुन के बारे में ज्यादा पता नहीं है. 38 लोग इन लाइव स्ट्रीम. बॉयज यार, लाइक द लाइव स्ट्रीम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. बहुत टाइम बात कर रहा हूँ मैं, तो मेक श्योर यू नो. आज 50 पहुंचाने थे वैसे लाइक्स, बट ठीक है, लाइक कर दो. व्हाट इज द बेस्ट क्लब इन अप इन यूपी दैट यू थिंक? इन यूपी क्रॉस ट्रेन का है वहां पे, आई थिंक. है थिंक क्या, देयर इज अ क्रॉस ट्रेन ब्रांच इन नोएडा. दैट्स गुड. Why nobody asking for Pooja fight in a week? For sure, yeah. मैंने तो announcement की थी. Nobody even watched the videos. Digambar is fighting this Suzuki guy. No, this guy is. Someone was suggesting that what if he fought him? I believe fame somewhat took over Anshul's mind. That 100% like that. I don't even blame him. I think like यार जब तुम 4,000 फॉलोअर्स से 1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच जाते हो ऐसे ही ओवरनाइट, किसी के भी दिमाग में कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा. बट आई डोंट थिंक दैट्स द मेन रीजन. ही इज अ हम्बल गाय. अंशुल को ओवरहाइप नहीं किया. He has reached a level where no Indian MMA fighter has reached. Anshul started training partner when he was in 21 and 8 years. He managed to get in the best. That's what I'm saying. He is a phenom. It's just that like he's hit a ceiling for now. Maybe he'll be able to break it, maybe not. But he's still going to be one of the pioneers for us. मैं तो हमेशा उसके बारे में बात करूंगा. इंडिया में कॉम्बैट स्पोर्ट्स का मतलब कराटे क्लास ज्वाइन करा दो. हाँ, मैंने मेरे स्कूल मेरी सोसाइटी में होती थी पार्क में. I'm going to fight amateur MMA for the first time this year. I'm 18 guys. Give me tips and wishes. You don't need tips from us, but all the very best, Arnav. कहाँ पे लड़ रहे हो? Not going to lie, but Angad is arguably one of the best MMA fighter who has actually mixed the MMA in his game plan. I just feel if he cracks someone into UFC, he will do good. I think he has a bit of issue like in terms of his striking diversity. But yes, like overall combo wise, he is a very well-rounded fighter. Warriors Co, Mutant and Crossing can think of planning some sort of mutual training kind of thing so that some top talents could take benefits of specialities of these gyms. I think वैसे to be honest, Warriors Co and Coach Sid जो cross train चलाते हैं, they don't have an issue with fighters once in a while training in different gyms, you know. So होता है वो.
Bharat Khandare's story is pretty emotional. I was watching about him. It is emotional to be honest, but like he's also cheated, so it's sort of tough for me to have some sympathy for him. Will Angad go for Road to UFC 2025? He could. He could. Indian fighters should fight with the heart. बहुत सारे इंडियन फाइटर्स घबरा जाते हैं. अंगद बिश जीता नहीं था, लेकिन उसने ताकत टक्कर दी थी. I agree. टक्कर तो दी थी. It's tough to say वैसे because we don't fight, but I agree to a certain extent. They're doing what are they doing different? Most of their fighters train abroad, bro. So they have better access to gyms in that sense. Some of the fighters. What's your potential matchups for lightweight division? Shinigami, what's up, man? Badi din baad. Should Nishan Dev shift to new boxing federation launched by Dana or stick with Matchroom? What's your opinion? I think he's young, so he should stick to Matchroom right now. And if Dana wala league बहुत बड़ा हो जाता है, then he can go there. Why I commented that Chungrang need to go to good striking gym if he wants to compete in UFC. Warriors Co seems to be grappling heavy. True, true. His striking can certainly improve. Um, Maybe he will make that change eventually, but he first needs to make some money to be able to make that jump and go abroad. I think our fighters should have 12 to 14 pro fights before UFC. हाँ, अगर कोई प्रमोशन यहाँ पे इतना often cards करा रहा है and fighters can get that many fights जल्दी, like in 3-4 years they can get in. If you can get to 12 fights in 4 years or 3 years, that's good. But अगर उससे कम हो रहा है तो it's tough because भाई रोटी कैसे कमाएगा बंदा. भाई राजेश पुजारी वर्सेस मनोज यादव बहुत इंटेंस फाइटर. रीमैच पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक इट्स अ वन साइडेड फाइट. और ये दूसरी फाइट थी इनकी एक्चुअली, क्योंकि दोनों कंटेंडर सीरीज में पहले लड़ चुके थे, वहां पे भी मनोज ने हराया था. बैंगलोर में मतलब कहाँ पे, मतलब कौन सी एमेच्योर टूर्नामेंट में? जिन डिस्कॉर्ड अगर तुम लोग ने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, और जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगा ना तब मैं तुम लोग से बात करूंगा. एटलीस्ट ही इज अ लॉट बेटर देन भरत खंडारे. हु? No, good luck, dude. Yeah, I think told you I'm going to O2 for my second UFC event run. Yeah, you told me, bro. Have fun. भाई let's be honest, पूजा का फर्स्ट वन ज्यादा डेंजरस थी as compared to next fight. हाँ, पावर वाइज ये थोड़ा ये वाला थोड़ा पॉइंट मैचअप ज्यादा लग रहा है मुझे. बोथ ऑफ देम विल बी ट्राइंग टू आउट पॉइंट ईच अदर. उस वाले में द अदर रेन डो सांटोस, आई थिंक शी हैड मोर पावर एंड शी हैड अ मोर ग्रैपलिंग थ्रेट. होप अ फाइट इज अर्ली प्रीलिम्स. इट इज. क्या जो यूएफसी की जिम इंडिया में वहां पर एमएमए फाइटर जा सकते हैं फ्री में? फ्री नहीं जा सकते. फ्री तो कुछ नहीं है ब्रो. हाँ, थैंक्स अर्नव. I think MFN should keep their contract flexible and allow fighters to go and fight in other organizations until they start doing pay-per-view often. Yeah, I'll talk about that also. Anshul is good, but his coach seems he talks weird things like Mike Breeden could have been a UFC champion, or he referred Magomed Ankalaev as Magomedov in fight analysis video. Okay. I watched the first fight of Pooja. Some clowns were saying that she lost that fight, but I mean she landed those 90 deep kicks on the midsection. I don't understand why these judges like head striking only. So the thing is, it's damage, Randeep. And I also, to a certain extent, agree with you. But I think you can make arguments for both sides. I can also 100% make an argument for why Pooja won that fight. So I'm not disagreeing with you. But like visibly, if you look at the damage when the fight was over, Pooja, that much you have to accept, Pooja had a lot more damage on her face. So visuals matter. It's a fight. Anga's chin is very good. He doesn't get knocked out but loses points initially if he fights a very strong and aggressive striker like Choi Chungre. Yeah. That's what now. If he can start using his jab a lot more and like some front kicks, I think he'll be very dangerous. But he's a heavy like front foot boxer, so that does get exposed at times. रोटी यूसी में फ्लाईवेट कैटेगरी होगी भाई या नहीं, ये कंफर्म हो जाए बस, ताकि अंगद compete कर पाए. नहीं तो वो बैंटरवेट में भी जा सकते हैं अगर फ्लाईवेट नहीं होगी. हाँ, होपफुली वन ऑफ दीज तो हो जाए, फ्लाईवेट ही हो जाए यार. हाउ टू चूज वेट क्लास? probably it should be a weight class where you are pretty much jacked. Like जैसे आई थिंक मैं फेदर वेट हूँ, क्योंकि मैं अराउंड 74-75 के आसपास हवर करता हूँ यूजली. 73 भी हो जाता है, इतना लाइट हूँ मैं. तो मैं फेदर वेट है 68 किलोज, तो मैं 68 पे compete करता. तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम उसका सोच लो. Honestly, I won't mind if Anshul just lays and plays in his next few fights if that gets him wins. Yeah, no one minds that.
मल्ला युद्ध probably. In my opinion should join different organizations. यहाँ fight lightweight के ऊपर सब खत्म हो जाता है. Who should join different organizations? Agree on your point. Japan, Korea held events continuously. That's why they have ample fighters now. Yeah. आना बारी भाई अगर ग्रोथ करना है तो फ्री में तो भेजना चाहिए ना. नहीं यार वो यूएफसी को ग्रोथ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे. वो तो मतलब उनके पास बहुत सारे फाइटर्स आ रहे हैं. I think if Angad versus Choi was 5 rounds, he'd have won. I agree. I still believe Angad is stronger and better than Choi. Yeah. I mean, it's a tough matchup for Choi. भेजना चाहिए बट भेजेंगे नहीं. भाई फ्री में तो आज का सिर्फ गालियां ही मिलती. Have you ever seen an Indian fighter, any Indian who could beat Ngannou if provided training? Anything can happen, bro. But ऐसे देखा तो नहीं है किसी को. Bro, start MMA discussion related subreddit for Indian audience. We will also share memes. I don't want to get into memes, bro. Memes के लिए बतेरे पेज है तुम्हारे पास. वही कर लो Instagram पे. भाई Shannon is a. I like memes. I just don't want that to be the focus here. Why Shannon is a fighter, always on her toes, circling around. You just should not engage with her on the feet. Grapple heavy game plan on a. No. I don't think that like Pooja doesn't grapple, bro. So like she doesn't have a lot of grappling at all. So I think she needs to outstrike her. That's why it's going to be a good striking matchup, but it could be very boring also. I think Anshul's biggest mistake was not working on his defense properly because it wasn't willing to expose it but it was Kim. Yeah. I mean, he can improve his defense for sure. Chungne versus Angad should at least be split decision. Actually, I rewatched that fight, and I think Angad won that fight quite clearly, to be honest. Like, Chungne had moments, but Angad was more dominant. If you want, we can do a breakdown. Discord पे कर लेंगे एक बार. Have you ever seen any Indian who could have beaten? I talked about that. Okay. भाई MFN में कितना पैसा मिलता है? वीडियो डाली है भरत भाई मैंने, एक बार देख लो, आप चैनल पे है. भाई डीना वाइट का कॉल आया, यूएफसी चले जाऊं क्या? बिल्कुल नुसरत. I meant Daniel and Jyoti. Okay. Yeah, eventually maybe they should. But that's what, yeah. How will they get those opportunities if they don't have a good record? वो tough हो जाता है. तो पहले रिकॉर्ड तो कहीं बनाना पड़ेगा उनको बाहर जाने से पहले. Can Ankit Byampura compete in MFN? Yeah, if he like gets some good amateur fights in, he'll get a chance. Let's be honest, Digambar has best striking fundamentals than anyone. His jab and that sneaky check hook. Yeah. I believe if Digambar works on his grappling, then he will do good in UFC potentially. So I don't think he has the best striking like in all Indians, but in lightweight Indian fighters, yes. His check hook is sneaky as heck. And he also has good, power. So I agree. Have you ever seen any? Bhai, Harvey has just spammed. I mean, most Indians are weight bullies. Angad, Shaman are the heavy guys. How Shaman is a featherweight. No, if you make the weight and you can perform, then that's not weight bully, bro. And Angad though actually was always a small guy. He was. That's the last thing you can call Angad. That dude fought like at featherweight, bro. Kya bol raha hai? I thought Corin won, to be honest. Fair enough. We can do a breakdown. It's a close fight. I don't doubt that, but I think Angad won. I think Angad did a lot more damage, bro. A lot more damage. Like Chugreng had a lot of control, but yeah. How UFC powerhouse prediction are so accurate, his knowledge seems unmatched. Fair enough. I don't watch him too much. Bro, kya meet? Nahin, bro, I don't think so. Elon versus Mark. फालतू क्वेश्चन. UFC में nepotism है क्या? थोड़ा बहुत तो है. Nepotism नहीं, but मतलब like favoritism. Do are women invited to road to UFC? Yes, man. बिल्कुल भाई, मजे मारो. Why Shannon को outstrike करना is difficult. I think her reach is more than Pooja. Shannon has good kicks, pocket में आने नहीं देगी. Pooja को easily kicking range पे रखेगी. Hopefully Pooja wins. हाँ, but like she can't just like I understand what you're saying, but Pooja doesn't have the skill set of being a grappler, so she has to use her skill set of being a wushu fighter and like a stand-up fighter. And I'm sure she fought against taller opponents. So opponents with bigger reach. Obviously, if Shannon is better than her, then she'll just get outworked. But I don't think she should change her strategy completely. And वैसे ही pocket में कुछ work करती नहीं है Pooja वैसे भी. So she'll also like to stay on the outside, which is why I'm saying it might be a boring fight. Height से क्या हो गया? कहीं तक भी जा सकते हो, flyweight में लड़ सकते हो. पहले ट्रेनिंग तो करो. यश. Every fighter in UFC बिल्कुल कहीं भी जा सकते हो. पहले ट्रेनिंग तो शुरू करो. Every fighter in UFC expects the heavyweight guys are weight bully. Except, okay. Rahul Thapa, kya? My God, was it Sanjeev versus Shamanand, man? Oh man, Shamanand is a fucking one. I mean, that was one heck of a fight. Tough fight.
Dude, भाई I'm all like I'm still am. I don't mind. बंदे ने सबसे पहले शुरू किया है तो. If Angad versus Conan was judged by UFC judges, Conan would have gotten the nod with way judges. I don't think so. You speak for yourself, bro. You don't have to speak for the UFC judges. What are you saying? That's a bit of a stretch. If UFC judges were scoring it, bro, it would be damage, and you just look at their faces after the fight. Like I don't even have to break down the whole fight for you. So Shannon is a very tough opponent. It's not a very tough opponent, but she has more experience in the same thing that Pooja has, which is like stand-up karate type. It's not karate, like taekwondo type striking. आपको क्या लगता है अगर यूएफसी में इंडिया से कोई चैंपियन बना तो वो वुमेन हो गया मैन. अच्छा, आई थिंक मैन. अगर कोई बना, Angad defeated Chungrang very clearly in first two rounds. Chungrang was dominant, won in moments, and just before the bell rang for round 3, so people get perception Chungrang won. Yeah, I mean we can do a breakdown if you guys are so heated about it. वैसे कोई point नहीं है, दोनों अच्छे ही perform कर रहे हैं तो maybe we should not fixate on it, but we can do a breakdown. भाई एमएमए में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर है या कार्डियो बेस्ड? भाई एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पावरफुल स्ट्राइक्स लैंड करनी है. कार्डियो बेस्ड इंड्योरेंस सही है, बट इन एमएमए जहां तक मैंने अभी तक समझा है, सिंस यू एनीवे फाइट इन बर्स्ट, लाइक आप 30 सेकंड्स 90 सेकंड के बर्स्ट में फाइट करते हो ज्यादा, एंड देन यू so obviously like you have to have good endurance. You should be able to do like 5-6 kilometer 7 kilometer run अच्छे से or at a good pace. But what matters more I think is like your explosive ट्रेनिंग, जो मैं इस साल थोड़ी उस पर फोकस करने वाला हूँ. मेरी एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग नहीं रही है इतनी. जंपिंग, स्प्रिंटिंग, बॉक्स जंप्स, ऑल ऑफ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. भाई आपको अगला इंडियन कौन लगता है यूएफसी जो जाए? देखते हैं ब्रो. Anand bhai is best. Chamanand versus Abdul Badakshi. Yeah, I don't think that's going to happen. I think Rahul Thapa versus Badakshi is going to happen. Imagine if Anshul Jubli win and reach top 15, then it will be a good story. Yeah. Pooja has good damage tolerance. True, to a certain extent. Pro flyweight is a dying division. I think Pantoja versus Mirab should be there in the line now. I don't think so, bro. A lot of exciting fighters. इतनी तो किसी की भी ट्रेनिंग नहीं है. ट्रेनिंग तो करता हूँ, फिर भी 5-2 बहुत कम है. 5-2 कम है, पर आपको मिल सकता है यार, ऐसा कुछ नहीं है. You can focus a lot on grappling more if you think you have like a striking disadvantage, but even striking में you can do a lot of damage. When will Pakistan stop pretending to be Dagestanis? भाई इस वॉलीबॉल, अरे जा ना नुसरत भाई, पहली बार बोलते दिया तूने. No way Sal Tomato would have scored for Angad. Shamanand was versus Jackie was boring and tired fight. The second fight, huh? DX. Yeah, fair enough. Like to a certain extent, like I would like to see more damage from him for sure. Yeah. Just like Mandeep also. अमिंदर का रशियन अपोनेंट कौन था भाई जिसके साथ फाइट कैंसिल हो गई? बताया नहीं उन्होंने, उनको पता नहीं था, कोई बाहर से ही था. What are your thoughts on American wrestling? I think it's not effective as it used to be when DC was around. अभी D1 wrestlers basic हो गए हैं. Like, हाँ, but that doesn't make it ineffective. It's a good style. It's just that MMA में बहुत सारी other things are being incorporated, but it's still a very good base. They just don't outshine like other fighters as much as they did before, because वो जो techniques हैं वो सारे basic MMA gyms में भी सिखाई जाती हैं. Is Sanjeet UFC material? To be honest, not right now. यादविंदर सिंह केज वॉरियर में फाइट करने वाले हैं मार्च 20 से. हाँ, कल बताया उन्होंने. If Pooja does good, she can be the first person, because of now she's the only winning fighter in the UFC, and chances to get a title fight is easier in women's division. Yeah, but I don't think like we should calm down right now. Don't make the same mistake as before. Let's see. Let her get a win. Many fittest calisthenics guys are in India. They just need to be motivated for MMA. Then India is unstoppable. Yeah, but it doesn't have much to do with that. It's more about skill. It's a skill issue. Strength तो बहुत है यहाँ पे. Mighty Mouse is 5-3-2. Yeah, Mighty Mouse is 5-2 or 5-3. Yeah. India versus Pakistan rivalry should be used in MMA for popularity. Yeah, करते तो हैं लोग. भाई क्या लगता है अंशुल जुबली कमबैक कर पाएगा? कर पाएगा, I think so. Just put in work. Yep. Yeah, Abdul Badakshi is Krishna Shroff's boyfriend. How can she see his boy getting smashed? But I think that fight will be good. Yes, Rajput fight in atomweight. Yeah. Anshul try in WW? What W? Conor versus Justin 4. No, I don't want that fight. भाई एक इंटरव्यू दिगंबर के साथ भी करो. तुम लोग लाइक्स तो पहुंचाओ पहले. 30 लाइक्स तो पहुंचते नहीं हमारे लाइव स्ट्रीम.
अमिंदर के इंटरव्यू को मुश्किल से लाइक 1,000 व्यूज मिले हैं, कहाँ से लाऊं मैं दिगंबर के साथ इंटरव्यू? Bro, can you explain? I saw somewhere that your cardio depends on your some type of muscles. Like if you twitch muscles, you will have good explosive power, but less endurance. Like yeah, so that is true. But most of us don't even train to. मतलब यार वो बहुत high level में ये differences पता चलते हैं. अब कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ज्यादा हाई लेवल ट्विच फाइबर होता है एंड दे हैव एन एबिलिटी टू एक्सप्लोर मोर. बट वो जो डिफरेंस है ना, वो बहुत, जब आपने अपनी पूरी बॉडी को, जैसे लोग बोलते हैं ना मैं जिम नहीं कर रहा, मेरी बॉडी ज्यादा बड़ी हो जाएगी. भाई ऐसी बड़ी हो भी नहीं जाती अगर तुम जब तक मेहनत करके करोगे. सेम वे के अंदर पीपल मेक एन एक्सक्यूज कि यार मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ना मेरे वो वाले फाइबर नहीं है या फिर मेरी वो एबिलिटी नहीं है. भाई पहले तुम अपने आप को work yourself to the limit, see what your limits are, and then maybe you can make these excuses. Even then you don't have to make these excuses. So my point is ki you should train for all these different things. You should train for to be able to run long. You should also train to be do a good 100-meter sprint or a 50-meter sprint. तो दोनों चीजें ट्रेन करनी है. वेदर आपका ये वाला है एबिलिटी या नहीं, you can forget that. But if you want an example, like Dinesh Nauram would be an example of someone who's very explosive, right? Explode करके लोगों को उठा के पटक देता है बंदा, ठीक है. On the other hand, I would say like someone like Max Holloway, he's someone who has a lot of cardio. He doesn't have a lot of like power in terms of like twitching like fast twitch fiber, but he has very good cardio and endurance, so he's able to fight for long periods with a lot of volume. बहुत सारे punches land कर सकता है. So I hope I answered your question. Explosive strength के लिए तो plyometrics workout best है. I agree to a certain extent. Yeah, weights भी incorporate कर सकते हो, but plyometrics ही top level है. अच्छा, welterweight, got it. I don't think so. भाई अंशुल को WWE में भेज दो जब यार. इंडियन देसी रेसलिंग वर्सेस अमेरिकन देसी रेसलिंग क्लोज रहता है, बट यूजुअली आई थिंक अमेरिकन इज ऑन टॉप. बट इंडिया इंडिया तो बहुत हाई लेवल है, ओलंपिक मेडल्स जीतते हैं हम. Chimaev versus Dickus. I believe if Kamzat needs to win, he should finish the fight in round 1-2 because if the fight goes distance. It's a close fight. Like I won't like. I think he'll have problem manhandling like Dickus. Chimaev बाकी सबके साथ कर पाया, but Dickus के साथ थोड़ा टफ होगा. Was the Angad interview with Aminder Digambar, and Aminder said he beat Digambar in school. Yeah, like he didn't beat him, but he was like कौन है बंदा हमारे स्कूल में जो है, तो वो थोड़ा चेक आउट कर रहा था कौन बंदा है. Kamzat Chimaev will be a good champ, but he has to be more active. Yeah, I doubt that'll happen. यार देहरादून में जॉब चाहिए म्यूटेंट एमएमए ट्रेन करने के लिए, कोई है हेल्प करे? जॉब तो ढूंढना, ऑनलाइन ढूंढो यार, फिर पता करो वहां के लिए. Kamzat will defeat Dickus with ease. That's not always the case, Karan. Sometimes when you overweight or like not at your optimal weight, you could lack power because your balance is not good. When he comes in, when Francis Ngannou is 235, 240, he's like the lean machine, bro. तो वो बहुत ज़्यादा effective हो जाती है, power output better रहता है. But usually the heavier fighter does have more power in terms of like raw strength, but like a slightly lighter fighter will have a better ability to deliver that power. So in MMA you would prefer someone to be mostly lighter, unless like आप grappling करने वाले हो और आपको grappling heavy style करना है, तो you want to have that advantage कि आप दूसरे बंदे पे लद जाओ, you know. I train Raja Visi Jiu-Jitsu, so hurts my coach. Maybe I will get blue belt in 2.5. Congrats, man. Bro, what do you think? Who has more cardio, boxer or an MMA fighter? MMA fighter. अगर तुम्हें चेक करना है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, 200 मीटर रन करो. अगर अंडर 10.3 सेकंड से बढ़िया है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पोटेंशियल. या अच्छा. अंशुल इज गेटिंग टू मच हेट वर्सेस, ये थोड़ा भी ना क्लिप करके गलत कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, बात की थी हमने इसके बारे में. ये ब्रूस ली यूएफसी में होता, उसकी वजह से तो बना है यूएफसी, उसके आइडिया की वजह से. भाई एमएफएन तक खेलकर क्या लाइव सेट हो सकती है क्या? नहीं. Imagine if Chimaev and DDP both gas out really bad after one. That'll be fun. If Indian wrestler transit to MMA, then India will dominate MMA worldwide.
If Kamzat doesn't get the visa to fight in US, I think Dana wouldn't give him title fight. No, but they do a lot of international shows. That was his debut island, and it was a very close fight. He didn't dominate him. Let's get that straight. I do believe Angad won the fight, but he didn't dominate him by any chance, and that was uh, Chungreng's debut in MFN. So, and you've seen the improvements, bro. Indian wrestlers are good, but not on Russia, Iron, Iran, USA level. At max, we get bronze. True. Stop this pseudo optimism, dude. We haven't done shit in UFC so far, and you're talking about dominating. If this was the case, Iran would be dominating in UFC. True. Thanks, Abhishek. Bro, what the hell was wrong with Alex? He was not throwing punches. Yeah, takedown का threat है ना पूरे time. Indians अपने पहले देखते हैं और work कम करते हैं. I agree. हम लोग ये करते हैं ज़्यादातर. Anyway, Discord तुम लोग ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो. मैंने लाइव स्ट्रीम का क्या कहते हैं मतलब मैंने इस लाइव स्ट्रीम में पिन कर रखा है. मेरे को निकलना है, मेरे को खाना वाना खाना है, तुम लोग के लिए वीडियो बनानी है कल के लिए, थोड़े बेटर डिजाइन्स करने हैं, प्लान करना है चैनल के लिए तुम लोग के लिए. सो मैं निकलता हूँ. मेक श्योर यू गाइज लाइक द लाइव स्ट्रीम, मेक श्योर यू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड. बड़ा मजा आएगा तुम लोग से वहां पे बात करके. एंड आई विल सी यू गाइज सून. ठीक है. Alice just got outmatched and he's not winning the rematch either. Okay, इसके बारे में बात करेंगे फिर से. Cricket lover, true. Okay, anyway, I'll see you boys. ठीक है, I'll see you guys soon. और कोई भी और अगर चीज है डिस्कॉर्ड में डिस्कस करते हैं. आई होप तुम लोग ने ज्वाइन कर लिया. एंड लेट्स डिस्कस वहाँ पे हाउ टू यूज दिस डिस्कॉर्ड, हाउ टू वॉच फाइट्स टुगेदर, क्योंकि वहाँ पे हम फाइट्स को साथ में देख सकते हैं तो मजा आएगा. ठीक है. I'll see you guys. Bye bye.